वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है लिसनिंग मॉड्यूल पर। जैसे कि ये है पार्ट 1। अगर आप पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊंगी आपको आंसर कैसे गैस करना है। जैसे कि सपोज आपसे कोई आंसर मिस हो जाता है, अगर जिन बच्चों को लिसनिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उनके लिए ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के एंड में ये पूरा टेस्ट होगा पार्ट 1 का, और आप खुद आंसर नोट डाउन करेंगे और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट गए अगर आप मेरे वे से करते हो। तो जैसे कि यहाँ क्वेश्चन है इंक्वायरी अबाउट ज्वाइनिंग यूथ काउंसिल। जैसे कि ये मेन टॉपिक है जिस पर ये पूरा 1 to 10 क्वेश्चन बेस्ड होंगे। जैसे कि फर्स्ट जो आंसर है वो तो ऑलरेडी रिटन है। जैसे कि नाम के बारे में था तो उसका सरनेम उन्होंने ऑलरेडी आंसर बता रखा है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि currently staying in a dash during the week। तो जैसे कि वो कहीं भी रुक सकते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली कहाँ रुक सकते हैं, जैसे कि होटल में और मोटल में। मोटल जैसे कि कुछ बच्चों को पता नहीं होगा मोटल क्या होता है। मोटल होता है होटल एक्सपेंसिव होता है फॉरेन कंट्रीज में। मोटल थोड़ा सा चीपर होता है एज़ कम्पेरेटिव टू होटल। सो लोग फॉरेन कंट्रीज में जैसे कनाडा में प्रेफर करते हैं मोटल में स्टे करना, क्योंकि वो कम मतलब कि कम एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेरेटिव टू होटल। और तीसरी ऑप्शन आ सकती है जैसे कि स्टूडेंट्स कहाँ स्टे करते हैं, हॉस्टल में। हॉस्टल भी आ सकता है। और मेरे अकॉर्डिंग यही 3 ऑप्शंस बनेगी, जहाँ तो होटल होगा या मोटल होगा या हॉस्टल होगा। और सेकंड क्वेश्चन है पोस्टल एड्रेस। जैसे कि यहाँ एड्रेस 17 के बाद जैसे कि कुछ भी एड्रेस आ सकता है। जैसे कि कोई स्ट्रीट का नाम होगा, वो स्ट्रीट का नाम आएगा। जैसे हाँ बिल्कुल मैंने स्टेटमेंट सही पढ़ी है। जैसे कि वहाँ स्ट्रीट का नाम आएगा। थर्ड में पोस्टल कोड होगा। पोस्टल कोड में क्या हो सकता है, जैसे कि पहले 3 नंबर हो सकते हैं, उसके बाद अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ये चीज़ पे हम गैस वर्क नहीं लगा सकते। जैसे कि सेकंड ऑप्शन में और थर्ड ऑप्शन में हम गैस वर्क नहीं लगा सकते, बट फर्स्ट ऑप्शन में हम गैस वर्क लगा सकते हैं। और जैसे कि फोर्थ ऑप्शन है ऑक्यूपेशन। तो फोर्थ ऑप्शन से ये क्लियर हो रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन में 99% हॉस्टल ही आएगा। एज़ पर मी भी हॉस्टल ही आएगा। क्यों? क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में वो क्लियर कर रहे हैं स्टूडेंट एंड पार्ट टाइम जॉब एज। तो जैसे कि यहाँ पार्ट टाइम जॉब वो क्या कर सकता है, जैसे कि पार्ट टाइम जॉब कोई एज अ सर्वेंट हो सकता है, जहाँ पार्ट टाइम जॉब ऐसा वेटर हो सकता है, या क्लीनर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पार्ट टाइम जॉब बेसिकली यही पार्ट टाइम जॉब में जॉब्स में आ जाता है। एंड फिफ्थ ऑप्शन है फिफ्थ क्वेश्चन है स्टडिंग डैश मेजर सब्जेक्ट। तो मेजर सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट का नाम आ सकता है। या जैसे कि हिस्ट्री है तो पॉलिटिक्स भी आ सकता है। इंग्लिश में इंग्लिश लिटरेचर भी आ सकता है। तो ये 1 वर्ड है तो इंग्लिश लिटरेचर तो नहीं आएगा, तो अकेला लिटरेचर भी आ सकता है, बट डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट होगा। सिक्स्थ ऑप्शन है हॉबीज डस अ लॉट ऑफ डैश एंड इंटरेस्टेड इज इन द डैश। तो वो इसमें हम गैस वर्क भी डिफ़िकल्ट है लगाना कि वो क्या करता है अक्सर और किस चीज़ में उसको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये ऑप्शन तो हमें ध्यान से सुननी ही पड़ेगी। तो जैसे कि 8th ऑप्शन है ऑन काउंसिल यूथ वांटेड टू वर्क विद द यंग पीपल हु आर डैश। तो ये ऑप्शन भी हमें ध्यान से सुननी पड़ेगी। अगर हमने 6th और 7th ऑप्शन ध्यान से सुनी होगी तो हम 8th ऑप्शन का फिर भी कहीं ना कहीं गैस बुक लगा सकते हैं। और जो 9th ऑप्शन है उसमें जैसे कि टाइम के बारे में बात होगी, उसमें वो पहले बोलेंगे कि नहीं 5:30 के बाद एकदम से चेंज कर देंगे, नहीं 4:30 आ सकता है या 10:30 आ सकता है। वो ऐसे टाइम 2-3 बार बोलेंगे और उन 2-3 बार टाइम बोलने में ही एक टाइम का आंसर होगा। और 10th में होगा मोबाइल नंबर, और 10th में जो मोबाइल नंबर होगा वो हमें ध्यान से सुनना होगा, बिकॉज़ जो मोबाइल नंबर है उसमें हम अक्सर वो बहुत फास्ट बोलते हैं और डिजिट हमसे मिस हो जाता है। तो पूरा फोकस से सुनना होगा और इस तरीके से आप गैस वर्क कर सकते हैं। अगर आपको सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब मैं ऑडियो प्ले करूँगी और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट गए हैं।
you will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Good morning, Youth Council. Caroline speaking. Oh, hello. I'm interested in standing for election to the Youth Council, and I was told to give you a call. That's good. Could I have your name, please? Yes, it's Roger Brown. Thank you. The young man's name is Roger Brown, so Brown has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 5. Good morning, Youth Council. Caroline speaking. Oh, hello. I'm interested in standing for election to the Youth Council, and I was told to give you a call. That's good. Could I have your name, please? Yes, it's Roger Brown. Thank you. I'm Caroline, the Youth Council Administrator. So, do you know much about what the council does, Roger? I've talked to Stephanie. I think she's the chair of the council. That's right. And she told me a lot about it. How it's a way for young people to discuss local issues, for example, and make suggestions to the town council. That's what made me interested. Fine. Well, let me take down some of your details. First of all, how old are you? You know the council is for young people aged from 13 to 18. I've just turned 18. And where do you live, Roger? Well, that's a bit complicated. At the moment, I'm looking for a flat to rent here, so I'm in a hostel from Monday to Friday. I go back to my parents' place at the weekend. OK, so where's the best place to send you some information about the council? Oh, to my parents' address, please. That's 17 Buckley Street, Buckleigh Street, Stamford, Lincolnshire. Though you don't really need the county. Oh, I know Stamford. It's a lovely town. And what's the postcode? PE9 7QT. Right, thank you. So are you working here or are you a student? I started studying at the university a couple of weeks ago, and I've got a part-time job for a few hours a week. What do you do? Well, I've done several different things. I've just finished a short-term contract as a courier, and now I'm working as a waiter in one of the big hotels. Uh-huh. That can't leave you much time for studying. Oh, it's not too bad. I managed to fit it all in. What are you studying? My ambition is to go into Parliament eventually, so my major subject is politics. That's partly why I think the Youth Council is important and want to be a part of it. And I suppose you're also taking a minor subject, aren't you? I know a lot of people study economics too. I chose history. To be honest, I'm not finding it as interesting as I expected. Before you hear the rest of the phone call, you have some time to look at questions 6 to 10. Now listen and answer questions 6 to 10. OK, so with your studying and your part-time job, do you have time for any other interests or hobbies? Well, I spend quite a lot of time cycling, both around town to get to university and to work, and also long distance, from here to London, for instance. That's pretty impressive. Anything else? For relaxation, I'm also keen on the cinema. I used to go at least once a week, but I can't manage to go so often now. Right. Are you sure you'll have enough time for the Youth Council? Yes, I've worked out that I can afford to reduce my hours at work, and that will make the time.
So is there any particular aspect of the Youth Council's work that appeals to you, Roger? Well, my sister is blind, so I'm particularly interested in working with disabled young people to try and improve the quality of their lives. That's great. Well, the best way to get involved is to be nominated by some people who you know. Right. Can you tell me how to set about organising that? You should talk to Jeffrey, our elections officer. I can arrange a meeting in the council office with him, if you like. Yes, please. He'll be here next Monday, if that suits you. That's the 14th, isn't it? Yes. I can manage late afternoon. Would you like to suggest a time? He generally leaves around 5:30. Well, would 4:30 be okay? My last class finishes at 4, so I'd have plenty of time to get to your office. Right, that's fine. Oh, and could I have a phone number we can contact you on? Yes, my mobile number's 07788 136711. Thank you. Well, we'll look forward to seeing you next week. Thanks very much. Goodbye. Bye. That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers.